Hello, today we are going to study the fourth lecture of the chapter Mathematical Logic. In this lecture, we are going to see about the logical connective of implication and double implication. And also after that, we will be solving question number 1 of exercise 1.4. So let's look at implication first. Implication, or also known as the conditional statement, is the compound statement formed by the connective implies, which is written as an arrow. So if P and Q are two statements connected by the group of words if and then, मतलब अगर if and then एक sentence में आता है, for example if P then Q, then this is called as a conditional statement and it is written in the symbolic form as P implies Q in this way. Okay, when we say implies, इसका मतलब है कि अगर statement P होता है तो फिर statement Q होना चाहिए. So इसका भी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं. तो पहले तो I will write true true false false for P and then for Q I write true false true false. तो जब स्टेटमेंट P ट्रू है और स्टेटमेंट Q भी ट्रू है तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू होता है. To understand this, let us use an example. For example, if P statement is he studies, okay, and Q statement is he passes the exam, or I'm just writing he passes. Right now we know कौन है ये he, so it is not an open sentence, just assume. When we say that P is true, मतलब he studied, and Q is also true, मतलब he passed the exam. So the statement actually is if he studies then he passes the exam. So this makes sense, right? अगर पहला वाला चीज कर रहा है और दूसरी वाली चीज भी हो रही है, अगर दोनों ट्रू है then overall it is a true statement. When P is true and Q is false, मतलब he studies, मतलब if he studies then he passes the exam, वो पास नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो false है. तो ये ओवरऑल एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है बिकॉज उसने कंडीशन जो क्यू होने के लिए जरूरी है वो कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई किया. अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको पास करना चाहिए, ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट. तो उसने कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, उसने पढ़ाई तो की पर वो पास नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट टू, इफ द कंडीशन इज ओनली फॉल्स, मतलब जो इफ वाला पार्ट है वही फॉल्स है, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की, तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते कि वो पास होता है कि नहीं होता है. तो इस रीजन से एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू. अगर वो नहीं पढ़ता है और वो पास हो गया वो भी ट्रू है, अगर वो नहीं पढ़ता और वो फेल हो गया तो फिर भी ये ट्रू है, ठीक है. ओनली प्रॉब्लम तब होता है जब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, इट इज ट्रू, बट द रिजल्ट इज फॉल्स, then it becomes a false statement. In all other cases, first case में तो condition is true, result is true, तो it will be true. In the last two, condition is only not true, तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं सकते about the result, then it is always true. Okay, so therefore it is only false when the condition is true but the result is false. Okay, so that is the truth table for a conditional statement. This one is slightly different and I would suggest that you should remember this. Now let us look at the next part, biconditional statement or double implication. यहाँ पे two statements are connected by the group of words if and only if. ठीक है, मतलब क्या है ना, एक्चुअली इसका मतलब when I write P double implication Q, P implies Q and Q implies P, दोनों तरफ implication होता है, ठीक है. इसका मतलब अगर सपोज मैं पिछला ही एग्जाम्पल लेती, he studies if and only if he passes the exam, मतलब क्या कि उसने पढ़ाई की तो वो पास हुआ, अगर वो पास हुआ तो उसने पढ़ाई की थी. there is no other way he can pass the exam. okay, this is a biconditional statement, दोनों तरफ कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है. तो इसके लिए जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तभी हम लोग को ना ये इसका ट्रूथ वैल्यूज कंसिडर करना पड़ता है और इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है. तो हम लोग ये करते हैं, पहले तो लेट अस राइट डाउन फॉर P and Q. Now see, true and true. तो पहले तो you see P implies Q, true implies true, that is true. Next, and
अभी Q implies P, तो true implies true is also true. So true and true is a true statement. Next, true implies false is false and false implies true is true. But फिर भी this is overall a false statement. And आ गया तो false. ठीक है, मैं इससे कर रही हूँ. अभी next, false implies true is true and true implies false. That is a false statement. Hence, this is false. Next, false implies false is true and false implies false is also true. So this becomes a true statement. Therefore, we can say that the biconditional statement is only true when both the truth values are the same. मतलब true true आया या false false आया तो same रहेगा. Otherwise, it is false. Okay. Now let us look at a few remarks. This one I've already written. The biconditional statement जो double arrow वाला है, that is nothing but P implies Q and Q implies P. Okay. अभी ये second remark जो है, that is for अगर मेरे को P double implication Q लिखना है, अलग अलग वे में कैसे लिख सकते हैं. First is Q if and only if P. P is necessary and sufficient for Q. नेसेसरी मतलब क्या, जरूरी है और काफी भी है Q के लिए. ठीक है, मतलब P होता है तो फिर Q होना चाहिए, और अगर Q हुआ है मतलब P हुआ ही होगा. ठीक है, अभी Q इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, दोनों का ऑर्डर बदल दिया है, बस कुछ फर्क नहीं पड़ता है. P implies Q and Q implies P. This is exactly this only written in words. P implies and is implied by Q. P Q को imply भी करता है और वो Q से implied भी है. ठीक है, ये बस अलग अलग तरीके हैं सेम चीज बताने का. Now let us solve exercise 1.4 question number 1. Write the following statements in symbolic form. If triangle is equilateral, then it is equiangular. So what we will do over here is I will write statement P as triangle is equilateral. I write statement Q as it is equiangular. Then in the symbolic form, it can be written as P implies Q. है ना? If है, then है. So this is P and this is Q, and therefore symbolic form is P implies Q. Okay, next. It is not true that I is a real number. यहाँ पे actually सब कुछ mixed है. तो it is not necessary at all that सिर्फ implication है, सब कुछ हो सकता है. So in this case it is not true है ना, तो this stands for negation. तो यहाँ पे I is a real number is statement P. The symbolic form is not P. Okay. Even though it is not cloudy today, it is still raining. यहाँ पे now what we will have to do is we will write it is cloudy today as statement P. Negation डालेंगे. Statement Q is it is raining. So this statement in symbolic form is not P and Q. Even though आया मतलब and है. ठीक है, let's do the next one. Milk is white if and only if the sky is not blue. यहाँ पे milk is white is your statement P. The sky is blue is statement Q, and if and only if है ना, so this is P double implication not Q. Okay, क्योंकि not की वजह से I'm putting negation. Now next, stock prices are high if and only if stocks are rising. Now stock prices are high is statement P, stocks are rising is Q, and this is P double implication Q. Okay. Last one, if Qutub Minar is in Delhi, then Taj Mahal is in Agra. Here Qutub Minar is in Delhi is statement P and Taj Mahal is in Agra is statement Q, and this is P implies Q. Okay.
So this is how we write these statements in the symbolic form. Now that we have done all possible connectives in the lectures so far, we will be able to solve exercise 1.4, question number 2 to question number 5 in the next lecture.